So today we will study about the Robertsonian translocation. Firstly, we will see the chromosomal translocation. A translocation is formed when has been transfer of material between chromosomes, require breakage of both chromosomes with repair in an abnormal arrangement. If the exchange results is no loss or gain of DNA, that is gene, the individual is clinically normal and is said to have a balanced translocation. A balanced translocation carrier is however at risk of producing chromosomally unbalanced gamete. यानी अगर जो ट्रांसलोकेशन हो गया है वो बैलेंस है, फिर भी जो फ्यूचर में वो गमीट प्रोड्यूस करेंगे वो अनबैलेंस हो सकती है, यानी कैरियर पर्सन की. There are two types of translocation, reciprocal and Robertsonian. So sometimes it's called centric fusion. So we will see one by one. A reciprocal translocation usually involves breakage of two non-homologous chromosomes, one chromosome from each of two different pairs, means similar pair not here present, with exchange of the fragment. Any of the pair of chromosome can be involved. The chromosome number remain at 46, यानी chromosome number change नहीं होगी. The incidence of reciprocal translocation is about 1 in 500. There is a separate tutorial about these. Here the reciprocal translocation, compare this reciprocal exchange with the Robertsonian translocation, which involve only the acrocentric chromosome, means the centromere present at the tip of the chromosome is called as the acrocentric. The chromosome number 13, 14, 15 and 21, 22 and result in the formation of new chromosome consisting of the whole of the long arm of the two acrocentric involved, which have been fused together. The incidence of Robertsonian translocation in general population is 1 in 1000. Reminder: chromosome, genes and heredity. A chromosome is made up of DNA and histone. We all know that. Each chromosome contains its own set of genes in a linear order. There are two copies of each autosomal gene, one on each homologous. So you can see here. How do the unbalanced form of translocation cause clinical problem? Now we will see. By altering the amount of product of gene involved. 3 copies of gene produce the trisomic and it's 1.5 times normal amount. 1 copy of genes causes the monosomy, 0.5 times normal amount. The altered amount may cause the anomalies directly or may alter the balance of gene acting in a pathway. Robertsonian translocation results from breakage of two acrocentric chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22 at or close to their centromere with subsequent fusion of their long arm to form a one chromosome. The normal acrocentric chromosome 13, 14, 15, 20 and 21. An acrocentric chromosome has its centromere close to 1A. The short arm of each chromosome are lost, but this is of no clinical importance as they contain gene for ribosomal RNA for which there are multiple copies of other acrocentric chromosome. यानी यहाँ पे gene loss नहीं हो रहे. The fact that the DNA structure on short arm of the acrocentric is so similar may be an important component of the formation of individual family Robertsonian translocation. The total chromosome number is reduced to 45 as two of the acrocentric have fused to form one new क्रोमोजोम. यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, देयरफॉर एक क्रोमोजोम से डिलीट हो रहे जीन और दूसरे क्रोमोजोम पे एक्सचेंज हो रहे, इसलिए जो 46 थे वो नंबर मेंटेन नहीं रहेगा, इट कन्वर्टेड इनटू 45. हियर डायग्राम यू कैन सी इन एक्सचेंज इन द प्रॉक्सिमल शॉर्ट आर्म. दिस इज द लॉस डिपेंडिंग ऑन वेयर द ब्रेकेज ऑकर्स. The resultant translocation chromosome can have 1 or 2 centromere, but this has no functional effect. As no gain or loss of important genetic material occur, therefore Robertson translocation carrier are normal. But once translocation occur have been formed, they can pass to its offspring. यानी अगर कैरियर है रॉबर्टसन तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा, लेकिन वो ट्रांसलोकेशन ऑफस्प्रिंग में कैरी करेगा तो ऑफस्प्रिंग में प्रॉब्लम हो सकता है.
The common Robertsonian translocation is fusion between one chromosome 30 and one chromosome 40. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13 and 14 क्रोमोजोम में क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है. कैरियर ऑफ मेल कैरियर डिस्क्राइब एज 45XY. डिलीशन यहाँ पे कहा ट्रांसलोकेशन है 30 and 14 के शॉर्ट आर्म में ट्रांसलोकेशन हो रहा है. Although Robertsonian translocation carriers are asymptomatic, they can produce unbalanced gamete which can result in monosomic और ट्राइसोमिक. तो जो रोबोसियन ट्रांसलोकेशन है उसमें जो इंडिविजुअल है वो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो जो जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे वो आइदर मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक हो सकते हैं. ट्राइसोमिक प्रोड्यूस द पटाउ सिंड्रोम, हियर द 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 30. For instance, the segregation of chromosome of carrier of a Robertsonian 13-14 translocation can result in children with trisomy 13 being born as shown here. Although children with translocation Patau syndrome may be born alive, they usually die in first few weeks or months of life. Trisomy 14 is a lethal as a trisomy for chromosome 15 and 21 during early fetal life. अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है 15 एंड 20 में तो वो फिटल की डेथ हो सकती है एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. ऑल्दो अगर डिलीशन या ट्रांसलोकेशन हो रहा है 13 एंड 14 में इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट रोबोसियन ट्रांसलोकेशन. जो 30-14 है वो ज़्यादा पाया जाता है. द मोस्ट important chemical effect of Robertsian translocation arise from those involving chromosome 21 as they can result in the birth children with Down syndrome. तो जो ट्राइसोमी फॉर्म होगी 30-40 की ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो उसमें कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. In fact, second in frequency and clinically the most important Robertsian translocation is occur between the chromosome 14 and 21. The Robertsonian translocation involving the chromosome 22 नंबर का क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो, ये कंडीशन रेयर पाई जाती है. The clinically feature of Down syndrome caused by either regularly trisomy 21 or by Robertsonian translocation involving chromosome 21 are exactly the same because both result in 3 copies of the gene on chromosome 28. यानी दोनों ये सिमिलर ही होगा. The recurrence risk for a family differ depending on whether the Down syndrome is caused by trisomy 21 or an unbalanced Robertsonian translocation. So now we'll see the pedigree which follow show the typical pedigree feature associated with Robertsian translocation, what they are. So here this is the male, rectangle indicate male and circle indicate the female. When the male parent and the female parent produce the 2 daughter, one daughter die at birth, heart disease and blockage of bowel, while other daughter is normal. And when they get married at age 42, it produce the 2 daughter. One daughter produce the Down syndrome as age 20, जिसका एज 20 है, और जो अदर डॉटर है वो नॉर्मल है. और एक सन भी 2 daughter and 1 son, they give birth to the 2 daughter and 1 son. 1 daughter डाउन सिंड्रोम है, 1 daughter नॉर्मल है, यानी कैरियर भी हो सकती है. एंड जो मेल सन है वो नॉर्मल है. व्हेन सन गेट मैरिड इट प्रोड्यूस द 2 son, 1 son नॉर्मल एंड 1 son विथ डाउन सिंड्रोम. एंड थर्ड प्रोजेनी है वो मिसकरेज एट 4 वीक में उसमें मिसकरेज होगा. तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया है. तो ये जो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, फिर मदर यंग एज 22 ईयर और द 20 व्हेन चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम बॉर्न. ओके, चिल्ड्रन विथ फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम इन 3 जनरेशन. तो 1, 2 और 3 में क्या हो रहा है, डाउन सिंड्रोम के फीचर आ रहे हैं. एंड 1 केस क्या दिख रही है हमें, मिसकरेज अर्ली एज इन प्रेगनेंसी. तो ये 3 रिजल्ट हमें इस पेडिग्री से पता चल रहे हैं. The affected people in this family have translocation Down syndrome. The translocation is between chromosome 40 and 21. The partial karyotype of affected people show unbalanced karyotype. 2 copies of chromosome 14 and 3 copies of chromosome 21. तो यहाँ पे जो chromosome 14 है उसकी 2 copies हो रही है, और जो 21 है उसकी 3 copies फॉर्म हो रही है.
This is a partial karyotype of father of the son with Down syndrome. It shows a balanced Robertsonian translation, 2 copies of chromosome 14 and 2 copies of chromosome 21. यहाँ पे दोनों की 2 कॉपीज है. हाउ 3 क्रोमोजोम ऑफ रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन सेग्रीगेट एंड मियोसिस. तो इसका सेग्रीगेशन कैसे होगा? यूजुअली 2 ऑफ देम सेग्रीगेटेड टुगेदर इनटू वन ऑफ द गमीट एट मियोसिस व्हाइल द रिमेनिंग सेग्रीगेट इनटू अनदर गमीट. This means there are 3 possible ways in which chromosome will segregated in described in next. So कैसे segregation हो रहा है? The 2 normal chromosome and the Robertsian translocation chromosome in a carrier can segregate in 3 way. तो how segregation? तो यहाँ पे कैसे segregation होगा? तो ये 2 gamete form हो रही है, ठीक है. तो and this gamete fertilize with the normal gamete. So it produce the one individual normal and also produce the second with the balance carrier. तो यहाँ ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो रही है, यानी ट्रिप्लॉइड इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. Another, the 2 normal chromosome and translocation carrier can segregate in 3 way. So here the gamete fertilize with normal gamete, and here 2 types of gamete produce translocation trisomy 40 and monosomy 40. So you can see. तो यहाँ पे मोनोसोमी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ट्राइसोमी फॉर्म हो रहा है. In next, the 2 normal chromosome and Robertsonian translocation carrier can segregate in 3 way. तो यहाँ पे भी नॉर्मल गमीट के साथ फर्टिलाइज हो रहा है और मोनोसोमी और ट्राइसोमी फॉर्म कर रहा है विद द डाउन सिंड्रोम. तो इन तीनों क्रॉस से हम ये पता चल रहा है कि जो रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन कैरियर पर्सन है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उसमें जो कैरियर जीन रहती है वो ट्रांसफ़र होते हैं ऑस्प्रिंग में, और ऑस्प्रिंग में सिंड्रोम फिर प्रोड्यूस हो सकता है आइदर मोनोसोमी और द ट्राइसोमी होने की वजह से. द 2 नॉर्मल क्रोमोसोम एंड रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन कैरी अ सेग्रीगेट इन 3 वे. तो यहाँ पे हमने तीनों की समरी ली है. तो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल एंड बैलेंस कैरियर फॉर्म हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी 14 एंड मोनोसोमी फॉर्म हो रहा है, और थर्ड में मोनोसोमी 21 एंड ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम पर आ रहे हैं. और ये जो तीनों ये जो these three are the lethal. As shown in the previous slide of the possible segregant monosomy 14, trisomy 40 and monosomy 21 are lethal. The remaining possibility are child with normal chromosome हो सकता है, child with balanced translocation and child with Down syndrome due to unbalanced form of translocation. Parent who is carrier of Robertsian translocation involving chromosome 21 as shown here. Therefore, high theoretical risk after conception of 1 in 3 having a child affected with translocation Down syndrome. But in a clinical practice, the observed risk of having live born child is less than this. For a female Robertsonian 14 and 21 carrier, it is about 10%. For a male Robertsian 14 and 21 carrier is about 1%. This is thought to be due to the loss through spontaneous miscarriage and perhaps effect of the translocation of meiosis or selection of sperm carrying the translocation. तो यहाँ पे ज़्यादा मिसकरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. Compare this figure with low recurrence and regular trisomy 21 Down syndrome. Regular trisomy 21 is due to an error in cell division and has a recurrence risk about 1 in 100. This is why important to karyotype person with Down syndrome to determine the chromosomal cause. The most family with either reciprocal or the Robertsonian translocation undertake fetal karyotyping by chronic villi sampling at about 10 weeks of amniocentesis and at 16 weeks in pregnancy to confirm that baby has either normal pattern of chromosome or the balanced form. And unbalanced karyotype are recognized legal indication for aiding pregnancy. यानी यहाँ पे फिर प्रेगनेंसी को एंड किया जाता है ड्यू टू एबॉर्शन. How does Robertsonian occur in the first place? The most Robertsonian translocation carriers have inherited balanced translocation chromosome from a parent. Occasionally, however, the parent have normal karyotype.
The translocation in offspring must have arisen de novo during the meiosis, which produce eggs or sperm which form the person with the translocation. About half the children with Down syndrome caused by unbalanced Robertsonian translocation have the condition as a result of de novo event. So from this we can conclude that the result from breakage of two acrocentric chromosome 13, 14, 15, 20 and 22 at or close to their centromere with subsequent fusion of their long arm to form one chromosome. Individual clinically normal if no gain or loss of material translocation carrier. So produce the balanced carrier. Unbalanced product may cause chromosomal abnormality baby. It result in miscarriage हो सकता है, stillbirth and फिर infertility. अदर फैमिली मेम्बर शुड बी ऑफर टेस्टिंग फॉर कैरियर टेस्ट. यानी अगर रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन कैरियर है तो तो उनमें क्या होना चाहिए, जिनके जनरेशन में उसका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग में, इसकी वजह से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन.